Yes, we were discussing about natures and significance of management. First chapter. तो हम लोग फिर से start करते हैं. We should start from the beginning, and I am going to ask you something. One second, Bill. 1 second. Yes. So what is management? Can anybody tell me what is management? My voice is clear. Yes, sir. So what is management? So the process of getting things done with aim of achieving goals effectively and efficiently. Very good. So the process of getting things done from other with the purpose of achieving a goal efficiently and effectively. So what is the difference between effectively and efficient? Effective and efficient. Difference between effective and efficient. Sir, effectively means finishing the given task, and efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. Very good. Very good. So, everybody knows about effectiveness and efficiency. Any problem in effectiveness? What is effectiveness and what is efficiency? देखिए बेटिया, जो टू वे कम्युनिकेशन है वो चलता रहना चाहिए, है ना, तभी इस साल हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, आप सिर्फ लॉग इन अपना अटेंडेंस देने के लिए, अच्छा इस साल अटेंडेंस लगेगी और सबकी लगेगी, ठीक है, तो बी प्रेजेंट एंड टेल योर फ्रेंड्स टू गेट अप अर्ली, क्योंकि आप लोगों की 9, 10, 11, 12 बजे तक सोने की आदत हो गई है. सो मेक योर हैबिट्स, change your habits, come to class every day because I am going to take attendance. I am going to take the attendance every day. So be present, all of you. So do you know what is effectiveness and efficiency? Anybody else? और कोई आंसर कर सकता है? Yes, बेटे. How many of you? Nobody is going to answer. रिस्पॉन्स मिलना चाहिए. मैं टिक करूंगा, पर्सनली फोन करूंगा आपको. Sir, effectiveness in management is concerned with doing. First, tell your name. Sir, Satakshi. Satakshi. Yes, sir. Yes. So, effectiveness in management is concerned with doing right task, and achieving goals on time. And efficiency means doing the task correctly and within minimum cost. Yes. Effectiveness means doing the task, completing the task, जैसे भी by hook or by crook आपको task complete करना है on time. That is effectiveness. लेकिन what is efficiency? Sorry. Yes, efficiency. Doing the task on time with minimum cost. That is efficiency. Okay. So, characteristics of management. Characteristics of management. Management is a goal-oriented process. There are few characteristics of management, that is 7 characteristics. So, management is goal-oriented process. यानी management क्या करता है? मैनेजमेंट सबसे पहले टारगेट, गोल फिक्स करता है कि हमको ये काम
करना है, कैसे करना है वो प्रोसेस तय किया जाता है. तो it is a goal oriented process. First of all, we have goal in our mind, and then management tries to achieve those goals with their subordinates. So management always aims to at achieving the organizational objectives. The functions and activities of manager lead to the achievement of organizational objectives. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving a common goal. The first thing is to fix the goal, fix the objectives, and then management tries to take all the individual collectively and achieve that goal. Then management is pervasive. What is pervasive? Management is pervasive. Sir, What do you mean management by is pervasive? everywhere. Sir, the thing which is everywhere. Yes. तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में है, हर बिजनेस में है. ठीक है. मैनेजमेंट आप किसी छोटे से छोटे गुमटी या जो फुटपाथ की दुकान है दैट इज कॉल्ड इटिनरेंट ट्रेडर्स, वहां से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हर जगह मैनेजमेंट प्रेजेंट है. तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. देन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इट इज मल्टी डायमेंशनल. एक मैनेजर को क्या क्या काम करना पड़ सकता है. इट इज मल्टी डायमेंशनल. लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो काम है उस, there are three dimensions: management of work, management of people, and management of operations. Three main objectives and activities: management of work, management of people, and management of operations. Management of work. All organizations are set up to perform some task or goal. Management activities aim at achieving goals or tasks to be accomplished. The task or work depend upon the nature of business. For example, work to be accomplished in a school is providing education, in hospital is to treat patient. यानी वर्क कैसे हम मैनेज करेंगे वर्क को. आपका स्कूल है, ठीक है, वर्क को डिवाइड किया गया अलग अलग सेक्शंस में, और अलग अलग सेक्शंस को में अलग अलग टीचर्स डिवाइड किए गए, एक टाइम टेबल बनाया गया. तो दिस इज ऑल मैनेजमेंट. आप सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में सेक्शंस डिवाइड नहीं होते, साइंस और कॉमर्स के डिवाइड नहीं होते, कॉमर्स के 2 सेक्शंस डिवाइड नहीं होते, तो इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट द स्टडीज इन द स्कूल? नो. ठीक है. आप कोई 11th क्लास वाला 12th में बैठ रहा है, 12th वाला जाके 6th क्लास में बैठ जा रहा है. ठीक है. तो ये अगर इस काम को, जो हमारा पढ़ाई का काम है, अगर हमारे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट ना होता सेक्शंस में, टीचर्स में, देन इट इज नॉट पॉसिबल. देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल. पीपल को मैनेज करना. आप अपने स्कूल का एग्जांपल लीजिए. टीचर्स को अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सो दैट दे कैन टीच इफेक्टिवली. ओके. सो मैनेजमेंट इज doing things done from others. तो others जो peoples, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे काम लेना ही मैनेजमेंट है. तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा so that they can work efficiently. Then third is management of operations. Operations refers to the activities of production cycle, such as buying inputs, converting them into semi-finished goods and finished goods. So, एक प्रोडक्शन हाउस में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसको सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड्स बना के उसको बेचना, एक साइकिल, एक पूरा ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इट हैज मेनली 3 डायमेंशन. वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क,
management of people, and management of operations. Then management is a continuous process. It is never ending process. मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता कि हमने ये काम खत्म कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया. मैनेजमेंट का काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है. एक ऑपरेशन खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ये एक ग्रुप एक्टिविटी है. ठीक है, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स विद अदर्स. ठीक है, दूसरों से काम लेना, दूसरों से गोल्स अचीव कराना. ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट करना. तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. एक इंडिविजुअल कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर सकता, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स पूरा नहीं कर सकता. सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. Management always refers to a group of people involved in managerial activities. Each individual performs his or her role at status and dependent, then only management function can be executed. Even the result of management affects every individual and every department of an organization. So it is always refers to a group effort and not the individual effort of one person. Then management is a dynamic function. What do you mean by dynamic? Can anybody explain me what is dynamic? Management is a dynamic function. Management is a dynamic function. What is dynamic? It keeps Sir, environment. बोलो तुम्हें बोलो. बोले तो sir, it keeps on changing. it keeps on changing. देखिए, business environment is keep on changing. It is a dynamic. ठीक है, आपके सप्लायर्स चेंज हो रहे हैं, आपके डिमांड चेंज हो रही है, आपके रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स चेंज हो रहे हैं, आपके बैंकर्स, आपके इन्वेस्टर्स. तो इट इज अ डायनामिक एनवायरनमेंट. तो इस डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए आपको भी डायनामिक होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी डायनामिक होना पड़ेगा. ठीक है, उसको पहले से एज्यूम करना होगा कि आगे चल के क्या सीन आने वाला है, क्या हमारे इन्वेस्टर्स कैसे बदलने वाले हैं, हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स. ठीक है, आपका भी टेस्ट और प्रेफरेंस, आप कस्टमर्स हैं, आपको लगता है आपका भी टेस्ट चेंज होते रहते हैं. ठीक है, आप कभी एक दुकान पे जाएंगे, फिर आपको लगेगा चलो आज इस दुकान पे चल के देखते हैं. तो कस्टमर्स भी चेंज होते हैं, सप्लायर्स भी चेंज होते हैं, इन्वेस्टर्स भी चेंज होते हैं, बैंकर्स भी चेंज होते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं. तो ये सारे मिलके एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक. सो मैनेजमेंट अगर उस एनवायरनमेंट में कोप अप करना है तो मैनेजमेंट को भी डायनामिक होना पड़ेगा. ओके, सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. Management has to make changes in goal, objectives, and other activities according to the changes taking place in the environment. Intangible. What is intangible? So which which cannot be touched. अगर रिलायंस अच्छी चल रही है और अच्छे प्रॉफिट्स रिलायंस कंपनी को मिल रहे हैं, रिलायंस कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर एक कंपनी बहुत अच्छी जा रही है, उसके बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो ग्रो कर रही है डे बाय डे, लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत अर्न किया है, तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? Sir, it's management. उनका मैनेजमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है. Yes, so management should be strong. Management should be good. Then only the company can grow. Yes, am I clear? Yes, sir. Am I clear? Now, switch off your microphones now. Yes. So
मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल, आपको दिखता नहीं है ये मैम, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, बट it reflects in the growth of the company, in the profits of the company. ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा दिखता है क्योंकि इस टुगेदर मोड हैज बीन enabled for this. Yes, so we cannot see the management, it is an intangible force, but we can feel, we can see its results. Okay, Apurva, can you listen me? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir, you are audible, but your video is not coming, sir. Why बेटे, I don't know what had happened. Yes, आप में से actually, किसी ने कुछ together गड़बड़ mode, किया है? sir, together mode open हो गया है. Yes, और I have closed it. तो ये कैसे ऑफ होगा बच्चे? ये टुगेदर मोड कैसे ऑफ होगा? sir, just a minute, just a minute. Sir. मैंने उसको Sir, on the कर right दिया था, hand side close किया था, corner. but I don't know what had happened. Hello, sir. Yes. Sir, actually, you're not doing anything from video. You can explain the chapter through your audio only. We are able to hear your voice. Okay, okay. So, features of management. One second. Objectives of management. Next topic is objectives of management. Okay. Objectives of management are the ends towards which the activities of an organization are directed. The management objectives of an organization can be classified into three major categories. So, objectives क्या हैं? Objectives are the end results of the management towards which the activities of the organizations are directed. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? It is the end result where the management wants to reach. It is the objectives or the end results where the management wants to reach. Okay. So there are three organizational objectives. Objectives. One is organizational objectives, social objectives, and personal objectives. इन तीन ऑब्जेक्टिव्स में मेनली काम करना होता है मैनेजमेंट को. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. So, what are organizational objectives? Objectives aim at prosperity and growth of the organization. ये ऑब्जेक्टिव जो है ये एम करता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैनेजर आर, वन इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ. तो मैनेजमेंट के तीन मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. देखिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहला एम क्या होगा आपका? आपका सबसे पहला एम होगा कि आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एम इज टू सर्वाइव. ओके. सो सर्वाइवल, द बेसिक पर्पस of each organization is to survive and existing in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost. तो पहला एम है क्या है? सर्वाइवल इन द
कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब हम अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, हम लोग अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट भले ही ना आए लेकिन हमारी कॉस्ट बनी रहे। मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री स्टार्ट की, प्लास्टिक फैक्ट्री, तो आप अपनी मैनेजमेंट कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब की कॉस्ट अगर आप निकाल रहे हैं, then you can survive. अगर आप continuous loss में जाएंगे, then you cannot survive in the competitive market. So first thing is to survive, then profit. अब हम सेकेंड स्टेज पे प्रॉफिट, यानी हम जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे, उतना ही हम ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड इज प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव of every organization is earning adequate amount of profit. Profit is essential for survival, growth, and expansion of the business. Third is growth. Business organization must grow and expand their activities. The success of any organization is measured by the growth rate. Growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, and number of employees. So third, organizational objectives क्या हैं? First is survival, यानी हम अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं, हम लॉस में नहीं है। प्रॉफिट, सेकंड इज प्रॉफिट, फर्स्ट वाज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस यूनिट का मेन एम क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तो अगर हमें मोर एंड मोर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, देन वी आर अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड इज ग्रोथ। एक बिजनेस यूनिट को हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, यानी अपने आज हम प्लास्टिक आइटम्स बना रहे हैं, हमने प्लास्टिक आइटम्स में क्रिकेट बैट्स बना रहे हैं, कल को हमने बकेट्स बनाना शुरू कर दिया, और परसों को हमने, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे बढ़ने चाहिए, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, दैट इज ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए आपको, फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट, एंड थर्ड इज ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी सबसे भी कहिए, और you all should be regular because I am going to take attendance every day, and this attendance will go to the principal office. Thank you. Anything else? Any problem? Any confusion? Sir, excuse me. Yes. Sir, please tell me that if we are need to make our school registers also. Yes. We are going to give you questions and homeworks, and you have to do it, and it will be checked also. Okay, sir. You have to make the registers, and it is to be checked by the teachers. Okay, sir. ठीक है, I will give you the questions every day, and you have to solve it in your fair copies. Separate copy for business studies. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Thank you.